Assalamu alaikum and welcome to another exciting and educating edition of Health and Fitness Show. जी हाँ, as always, Health and Fitness Show is bringing you something different, something unique, and I must say happy Ramadan to everyone, to all our listeners and viewers. आज का शो हमारा थोड़ा यूनिक इसलिए भी है क्योंकि आज हम पहली दफ़ा कुछ चीज़ नई ट्राई करने जा रहे हैं. हमने कहा कि आज का टॉपिक ऐसा है कि उसके लिहाज से ही हम कोई जगह मुंतखब करें और आज का टॉपिक है हमारा हेल्दी रमज़ान इन लूटन. यस, यू हैव हर्ड मी करेक्टली. वी आर टॉकिंग अबाउट हेल्दी रमज़ान इन लूटन. और आज मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं नन अदर देन आवर वेरी ओन डॉक्टर ताहिर महमूद, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमारे कम्युनिटी की बहुत वेल नोन पर्सनैलिटी है. एंड आज हम इनके साथ बात करेंगे कि हेल्थ एंड फिट हम एक हेल्थी रमज़ान के साथ किस तरह गुजार सकते हैं. ये प्रोग्राम रिकॉर्डेड है. इसको हमने रिकॉर्ड इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जाहिर सी बात है जिस वक्त हमारा ये प्रोग्राम when it's broadcasting around 7 o'clock, उस वक्त अंधेरा हो चुका है, लोग रोज़ा खोल के थोड़ा सा आराम कर रहे होंगे, तरावियों की तैयारी कर रहे होंगे. सो व्हाई नॉट डू इट अर्ली इन द डे. सो रमज़ान का स्टार्ट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह. अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा मौसम दिया है, बहुत अच्छी जगह दी है और इसी मौजू पे और मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप हमें सब जो सुन रहे हैं या देख रहे हैं ठीक ठाक होंगे, अपने रमज़ान की शुरुआत अच्छी तरीके से कर चुके होंगे. इसी मौजू पे इसी बात पे हम अपने गेस्ट और शैला से द वेरी फर्स्ट होस्ट ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस शो डॉक्टर ताहिर महमूद का भी इंट्रोडक्शन करते हैं. ताहिर भाई अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या हाल है आपके? थैंक यू वेरी मच फहद. थैंक यू वेरी मच. सॉरी मेरी आवाज़ आज थोड़ी सी होस्ट है क्योंकि मुझे 1-2 दिन से वायरस इन्फेक्शन हो चुका है. कोविड नहीं है, मैंने टेस्ट किया उससे पहले तो मैंने इस फहद को बता दिया था. तो लेकिन चूँकि ये प्रोग्राम था तो मैंने कहा नहीं, हम जाके करता हूँ क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया हुआ था. थैंक यू सो मच. इट्स रियली गुड, इट्स वेरी यूनिक एज यू मेंशन्ड कि इट्स द फर्स्ट टाइम हम बरी पार्क के अंदर मिडल ऑफ बरी पार्क में आके लाइव फुटेज ले रहे हैं और बातचीत करेंगे. बातचीत वही होगी रमज़ान के बारे में, हेल्थ के बारे में, हम क्या खाएं क्या ना खाएं, किसको रखना चाहिए किसको नहीं रखना चाहिए. अभी बारिश भी होने वाली है, अगर बारिश होगी तो हम उधर चले जाएंगे. डेफिनेटली. ताहिर भाई, जैसे कि आपने बताया कि इट्स अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस और मैं आई मस्ट से इट्स अ रियली ब्यूटीफुल व्यू ऑफ बरी पार्क. और मैंने बरी पार्क को कभी इतना लाइट नहीं देखा है. हमेशा यहाँ पे गहमा गहमी रहती है इवन एट दिस टाइम ऑफ द डे, जो कि अर्ली टाइमिंग्स है. ट्रैफिक अच्छी खासी ब्लॉक हो रही है. हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं. जैसे कि हमने कहा कि हमारा टॉपिक है आज का हेल्दी रमज़ान इन लूटन. सबसे पहला सवाल ये मैं यही करना चाहूँगा कि आप हेल्दी रमज़ान किस तरह कर सकते हैं. हेल्दी रमज़ान का मतलब ये है कि आप रोज़े रखें. अल्लाह ताला ने आपको अगर इस्तिताअत दी है, आप रमज़ान के रोज़े रखें और उसके साथ अपनी बॉडी की भी, अपने जिस्म की भी लुक आफ्टर करें. फॉर एग्ज़ाम्पल इसका ये है कि आपकी जो रूटीन है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप रमज़ान से पहले जिम जाते थे या वॉक करते थे, एक्सरसाइज करते थे, आप उसको लाइटर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी ईटिंग की तरफ जाएँ. हेल्दी ईटिंग की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा जाएँ. हम उसके बारे में भी बात करेंगे थोड़ी देर. एग्जैक्टली. और जहाँ हेल्दी ईटिंग की बात आती है वहाँ जाहिर सी बात है सबसे बड़ी चीज़ जो हम पूछते हैं कि हम क्या कोई स्पेसिफिक डाइटरी रिकमेंडेशंस हैं जो कि हम लें स्पेशली इन द मंथ ऑफ रमज़ान, क्योंकि रमज़ान का ऐसा महीना है कि हम हर चीज़ नहीं खा सकते. और जैसे कि हम देसी हैं और देसी डाइट्स हमारी बहुत यूनिक होती है कि हमारा जब हम अफ्तार करते हैं तो हमारा अफ्तार बेइंतहा ज़बरदस्त होता है, जो कि हम इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा हमें सेकंड हाफ में जब हम जाएंगे ब्रेक के बाद तो हम जाके स्ट्रीट पे लोगों से बात भी करेंगे, मालूमात भी लेंगे, उनकी राय भी लेंगे कि क्या वो खाना पसंद करते हैं रमज़ान में, किस तरह वो अपना रमज़ान गुजारना पसंद करते हैं. लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि जब हमारा दस्तरखान लगता है घरों में, आम घरों में, तो समोसे पकौड़े सारी चीज़ें होती हैं और फिर खाना ज़बरदस्त होता है. फिर जब हम कहीं अफ्तारी की दावत में जाए तो वहाँ पर भी ज़बरदस्त माशाल्लाह खाना होता है. तो इसके अलावा अगर हम एक अच्छी डाइट रखना चाहें तो हम ऐसी क्या चीज़ खाएं जो कि आप कहते हैं रिकमेंड है हमारे लिए, जो कि इंश्योर करें हमारी हेल्थ मेंटेन रहे. हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने. रमज़ान में हमें डाइट का ख्याल रखना चाहिए और ये याद रखना चाहिए कि चूँकि हम फास्ट कर रहे होते हैं, इस वजह से हमारी बॉडी की ज़रूरियात थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं आम दिनों से. आम दिनों में हम स्नैक भी ले लेते हैं, चाय भी लेते हैं, बिस्किट खाते हैं, केक खाते हैं. लेकिन रमज़ान में चूँकि 12 घंटे का फास्टिंग होगी तो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं. वो क्या है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन्स लें, कार्ब्स को कम करने की कोशिश करें और हेल्दी फ़ैट को लें, जिससे आपके अंदर एनर्जी काफ़ी देर तक रहेगी. और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें ताकि आपके जिस्म डिहाइड्रेट ना हो. ये जो मौसम देख रहे हैं ये तो बहुत कम है, इसमें तो सर्दी है, इसमें बहुत कम लोगों को अब प्यास महसूस होगी. लेकिन वो लोग जो चाय और कॉफ़ी पीते रहते हैं उनको थोड़ी सी एडिक्शन हो जाती है, वो उनको प्यास ज़्यादा लगती है. ये अगर आप खाना ऐसा खाएँ, आप बहुत ही मीट खाएँ सुबह शाम, इसमें आप गोश्त ज़्यादा खाएँ, चिकन खाएँ,
तो उससे आपको पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको डिहाइड्रेशन और आपको पूरा दिन आपको जो है ना आपकी तबीयत ख़राब रहेगी क्योंकि आपको प्यास लगेगी। तो इस वजह से प्रोटीन का ज़्यादा इस्तेमाल करें, कार्ब्स कम करें, हेल्दी फैट लें और न्यूट्रिएंट्स और विटामिन ज़्यादा इस्तेमाल करें और सिंपल वाटर पे इन्हिसार करें। तो आपके लिहाज से हमें क्या चीज़ खाना ज़्यादा बेहतर होगा हमारे सेहत के लिए? कोई ऐसी स्पेसिफिक डाइट प्लान हम उसको शेप कर सकते हैं, या हम कुछ भी खाएं, या अगर हम खाएं तो मॉडरेशन में खाएं? आप कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे पोर्शन रखने चाहिए ताकि आपके पोर्शंस कम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अफ्तारी के दौरान अगर आपके पास प्रोटीन ज़्यादा है, अगर फॉर मीट है आपके पास और इसके बाद चिकन है, फ़िश है, दालें हैं, चिकपीज़ हैं, चावल हैं, रोटी है, तो ये बेस्ट है। उसके साथ वेजिटेबल्स हैं, सैलड है और पानी है। डेट्स आप जब खाते हैं, डेट्स में सिर्फ शुगर नहीं होती, उसके अंदर फाइबर्स भी होते हैं जो आपको बड़ी लॉन्ग लास्ट एनर्जी देते हैं। लेकिन आपने डेट्स खाते वक्त केयरफुल होना है कि ज़्यादा डेट्स खाने से भी आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो लेकिन आपने एनर्जी जो आपकी जो फूड की एनर्जी होगी है वो उसमें प्रोटीन्स भी होने चाहिए, फ़ैट भी होने चाहिए और कार्ब्स भी होने चाहिए, जिसमें आपकी रोटी आती है, चपाती आती है, चावल आते हैं, ये कार्ब्स में आते हैं, ठीक है। और मिनरल्स में आते हैं, योगर्ट आ जाएगा, आपका फ्रूट आ जाएगा, नट्स खा सकते हैं आप। ये सारी चीज़ें खाने से आपकी डाइट बहुत ही बैलेंस होनी चाहिए, ख़ासकर अफ्तारी के दौरान। सही सही। अच्छा, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मौसम अब काफ़ी बेहतर है, हवा भी ज़बरदस्त चल रही है, लेकिन अगर जाहिर सी बात है हर कोई तो यूके में एक जैसा वेदर नहीं होता है, हर वक्त एक जैसा वेदर नहीं रहता है, कभी गर्मी हो जाती है, कभी सर्दी हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी फ़िलहाल थोड़ा मौसम ठंडा है तो प्यास की शिद्दत इतनी ज़्यादा नहीं लग रही, लेकिन जब मौसम थोड़ा गर्म होता है, या जैसा भी हम लोग ड्यूरिंग द एंड ऑफ द मंथ जा रहे होंगे जहाँ मौसम के अंदर गर्मी आनी शुरू हो जाएगी, तो उस वक्त जब प्यास की शिद्दत होती है, हम प्यास को किस तरह रेगुलेट करें? क्या हम खाएं या कितना पानी हम पिएँ एटलीस्ट, और किस तरह हम पानी का इंटेक रखें ताकि हमें डिहाइड्रेशन ना हो? अभी तो बड़े खुशकिस्मत हैं हम कि इस मार्च के महीने में और अगले रोज़े भी मार्च में होंगे, उसके बाद फरवरी में चले जाएंगे, 2-4 साल के बाद जनवरी आ जाएगा, फिर दिसंबर क्रिसमस में आ जाएगा, फिर अगले 10 साल के करीब ये जितने भी रोज़े होंगे ये सारे के सारे विंटर में होंगे। उसमें एक तो ड्यूरेशन कम होगा रोज़ों का, फास्टिंग का, और दूसरी बात ये होगा कि उसमें ज़्यादा हीट नहीं होगी, तो उसमें आपको डिहाइड्रेशन का रिस्क कम होगा। लेकिन अभी भी जो लोग पानी कम पीते हैं उनको सहर में पानी पीना चाहिए। आपको 2 लीटर पानी तो ज़रूर पीना चाहिए, दोनों में अफ्तारी के दौरान और सहरी के दौरान। इसमें आपके ये जो आपकी लस्सी आती है वो भी आती है, आपकी टी कॉफ़ी भी आती है, आपका पानी भी आता है और आपके सालन के अंदर जो करी आती है, सब कुछ मिला के 2 लीटर बन जाना चाहिए। तो 2 लीटर पानी इनफ होता है। लेकिन अगर आप सिर्फ 2 लीटर का सालन ही खा लें तो आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगी। तो पानी बहुत ज़रूरी है, कम से कम 2 गिलास, बड़े गिलास जो 500 ml ईच आपको सहरी के दौरान और 2 गिलास आपको अफ्तारी के दौरान बस पीने चाहिए। या ताहिर भाई, अगर इतने सारा पानी एक साथ पिएंगे तो बाथरूम लगा रहेगा सीधा सीधा। नहीं, फिर लेकिन आपको पूरा दिन आप पानी नहीं पिएंगे ना, आप पूरा दिन पानी नहीं पिएंगे। और वो जो लोग जिनको छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, जिसमें कि लाइक गाउट हो गया, इस तरह की प्रॉब्लम होती है, उनको भी बड़ा ज़रूरी है कि वो पानी अच्छी तरह पानी पिएँ और ऐसी ग़िज़ा खाएँ जिसमें वो उनकी छोटी मोटी प्रॉब्लम होती हैं वो ना हो। सही। अच्छा, हमारे यहाँ एक सबसे बड़ी चीज़ है चाय, कॉफ़ी, एक बहुत आम चीज़ है, एक आम कल्चर है। जी, जी। और जाहिर सी बात है रमज़ान में वो जो चाय के आदी होते हैं या कॉफ़ी की पीने के आदी होते हैं, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे लोग हैं हमारे दोस्त ऐसे कि जो अफ्तार करते के साथ सबसे पहला काम होता है उनका कॉफ़ी पीना। तो आपका क्या इसमें राय है मेडिकली कि क्या चीज़ बेहतर है? क्योंकि बाज़ लोग फ़िज़ी ड्रिंक्स पीते हैं, बाज़ लोग शरबत पीते हैं, बाज़ लोग डायरेक्ट कॉफ़ी पीते हैं, तो आपकी इसमें क्या राय है? शरबत का तो मैं कभी कायल नहीं रहा। जो भी आपके रेड कलर के शरबत मिलते हैं, पिंक कलर के शरबत मिलते हैं, इनके अंदर जहर होता है, पॉइज़न होता है। ये अच्छा। कभी नहीं पीना चाहिए आपको, चाहे किसी तरह का अफ़ज़ा हो, चाहे किसी तरह का हो, कभी नहीं पीना चाहिए आपको। एक बात याद रखिए, ठीक है। कॉफ़ी और टी के हमेशा पूरी दुनिया में पूरी सदियों से इनके 2 ग्रुप्स आते रह गए। कुछ लोग टी लवर्स हैं, कुछ कॉफ़ी लवर्स हैं। दोनों अच्छी हैं आपके लिए, जिन्हें पीनी होती है वो तो पिएंगे। इसका सिर्फ ये प्रॉब्लम होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पिएंगे या टी पिएंगे सहरी के दौरान या फास्टिंग के दौरान, तो फिर आपको वो पेशाब ज़्यादा आएगा। जब पेशाब ज़्यादा आएगा तो आपको डिहाइड्रेशन का रिस्क ज़्यादा होगा, इनकन्वीनियंस होगा। लेकिन मॉडरेट अमाउंट में 1-2 कप पीने से मेरा नहीं ख्याल कोई प्रॉब्लम होगा। लेकिन ये उन शरबतों से बेहतर है जो रंग बिरंगी शरबत पीते हैं, जो फलूदे के अंदर डाल के पीते हैं, बर्फ़ के अंदर डाल के पीते हैं और इसके अंदर खुशबू भी होती है।
ये सब केमिकल्स होते हैं, ये आपको दिमाग से लेके आपके घुटनों तक आपके लिए जहर है। याद रखें मेरी बात। जी जी। ओहो हो, ये तो मुझे इस बारे में ज़्यादा पता ही नहीं था। मुझे भी तो बाद में पता चला, पढ़ने के बाद पता चला। यार इसका मतलब है लाल शरबतों का बैन शुरू हो जाएगा। अच्छा, जहाँ तक बात आती है मेडिकल केयर की, क्योंकि अक्सर बेशतर होता है कि हम रोज़ा रख रहे होते हैं बाद औक़ात बगैर सोचे समझे कि हमारी सेहत पे उस पर क्या असर पड़ रहा होता है। तो सबसे बड़ी सवाल जो एक अक्सर बेशतर लोगों ने मुझसे पूछा है, आम लोगों ने, चाहे मस्जिद में चाहे आसपास कुछ सवालात मस्जिद स्टूडियो में भी आए, उनमें एक है कि हमें मेडिकल एडवाइस कब लेनी चाहिए ड्यूरिंग रमज़ान। बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। मेडिकल एडवाइस रमज़ान में कब लेनी चाहिए? खुदा न खास्ता अगर आप रोज़े से हैं और अगर आपको बहुत ज़्यादा बुखार है, आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है, अगर आप ये आपकी फैमिली समेत ही है कि आप बातें सही नहीं कर रहे हैं, आपको कंफ्यूज है, ठीक है, ब्रीदिंग फास्ट है आपकी, और आप नकात इतनी ज़्यादा है कि आपकी ब्रीदिंग पे फ़र्क पड़ रहा है, आपकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो गई है, आप चल फिर नहीं सकते, तो उस वक्त आपको डॉक्टर के पास या डॉक्टर से या 111 पे ज़रूर कॉल करनी चाहिए। उनको बताना चाहिए कि आप फास्टिंग कर रहे हैं और आपकी ये पोजीशन है, और ये भी बताना है कि अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं तो वो भी हमें बताना चाहिए। सही, हम उनकी तरफ दोबारा आएंगे अभी। जी सही। तो जहाँ तक हमारा क्योंकि जहाँ ये बात आती है कि हम कौन लोग एडवाइस ले सकते हैं, वहीं ये बात भी आती है कि कौन लोग रोज़ा रख सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि हमारे बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स हैं जो कि डायबिटिक हैं, लेकिन उनको उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल में, बहुत सारे लोगों की डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है, बहुत सारे एस्थेमिक हैं जो कि रोज़ा रखना चाहते हैं, जिनको मना होता है रोज़ा रखना। तो आपके मेडिकली लिहाज से कौन डायबिटिक पेशेंट्स हैं जो रोज़ा रख सकते हैं, या किस तरह मेडिकेशंस को अपने बहुत ट्वीक अच्छा कर सवाल सकते हैं? किया। ये जो एरिया देख रहे हैं ना आप, ये जो एरिया है, ये सारा एरिया, इसमें जो डायबिटीज़ के लोग हैं और हार्ट प्रॉब्लम के लोग हैं वो नेशनल एवरेज से ज़्यादा हैं। इसमें जो लोग रह रहे हैं जिनको कैंसर है वो भी नेशनल एवरेज से ज़्यादा है, ठीक है। तो उन लोगों के लिए जिनको कोई हार्ट प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, या जिनको कोई फालज का ख़तरा आ गया खुदा न खास्ता, या कैंसर के साथ सफ़र कर रहे हैं, और या उनको मेडिकल लॉन्ग टर्म मेडिकल कंडीशन है जिसके साथ उनको दवाई लेनी पड़ती है, अगर दवाई ना लें तो आपको उनकी तबीयत पे असर पड़ेगा, उनको रोज़ा रखने पे, रोज़ा छोड़ने पे कोई मजाका नहीं है। ये एक ऑथेंटिक है, ये ब्रिटिश कौंसिल ऑफ मुस्लिम की और दुनिया जहान में जो है वो इस चीज़ पे एहतियाज हो चुका है। और दूसरी बात यह है कि ये रूलिंग है इसकी पूरी दुनिया में, कि जो भी बंदे हैं जिनको मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, और रोज़ा रखने से अगर आपके जिस्म पे और आपके दिमाग पे और आपके मेडिकल प्रॉब्लम पे ज़्यादा ख़तरनाक असर पड़ता है तो वो रोज़ा नहीं रखेंगे। मैं लोगों से हमेशा कहता हूँ कि आपको रमज़ान में डॉक्टर से नहीं पूछना चाहिए, रमज़ान स्टार्ट होने से पहले पूछना चाहिए डॉक्टर के पास जाके, डॉक्टर साहब मेरी डायबिटीज़ चेक करें, बताएं मैं रोज़ा रखूँ कि ना रखूँ। और जब डॉक्टर आपको बताएंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डॉक्टर साहब को बात करने के बाद आप बाहर आके गाड़ी में बैठ के वही करना है जो आप करना चाहते हैं, ठीक है, जो लोग करना चाहते हैं, और घर आके अपने घर वालों को बताना है नहीं डॉक्टर ने कहा रोज़ा रख लो, कोई ऐसी बात नहीं है, ये ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अगर आप अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे, अगर आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे रमज़ान के दौरान, तो ये बात याद रखें कि अल्लाह ताला ने आपको बहुत खूबसूरत बनाया है, ठीक है, अल्लाह ताला ने आपके बच्चों को बहुत खूबसूरत बनाया है, इंसान को बहुत खूबसूरत बनाया है, तो अल्लाह ताला आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप लुक आफ्टर करेंगे आप, ठीक है। तो अगर आप कोई भी ऐसी काम करेंगे जिससे आपके जिस्म पे गलत असर पड़ेगा, या अगर आप से इबादत नहीं कर सकेंगे, अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं कर सकेंगे, तो आप पे रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है, और आप रोज़ा छोड़ सकते हैं और फिदिया दे सकते हैं, या शॉर्टर डेज़ में भी कर सकते हैं, ये भी लंबी बहस है। लेकिन डायबिटीज़ के लोग और हार्ट प्रॉब्लम के लोग, ब्लड प्रेशर के लोग जो दवाइयाँ लेते हैं दिन में 2-2 3-3 दफ़ा, अपने डॉक्टर से पहले पता करें, रमज़ान स्टार्ट होने से पहले पता करें कि आप मेरी चेकअप करें और बताएं कि मैं रोज़ा रख सकता हूँ कि नहीं, डॉक्टर आपको बेस्ट बताएगा उस पर। एग्जैक्टली। और ऐसी बात है, यहाँ पे रूलिंग है इस्लाम की कि अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, या आप रोज़े से आपकी तबीयत मज़ीद ख़राब हो सकती है, वहाँ आपको रोज़े की छूट दी गई है, वहाँ पे आप ऑल्टरनेटिव मेथड्स भी रख सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अर्से में तो हम लोग सर्दियों में जा ही रहे हैं, तो सर्दियों के अंदर वैसे ही रोज़े छोटे होंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा ज़िंदगी रही तो आप उस वक्त रख सकते हैं। और अगर आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल आ गई, जो कि आप कर सकते हैं डायबिटीज़ कंट्रोल, तो अगर डायबिटीज़ कंट्रोल आ गई तो इंशाल्लाह ज़रूर आप कर सकते हैं। नहीं, वही है ना कि आपकी डायबिटीज़ वेल कंट्रोल्ड है तो डिफरेंट है, इसमें दवाइयाँ होती हैं, गोलियाँ होती हैं, गोलियाँ हम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक शुगर का लेवल होना चाहिए, इसके मुताबिक हम एडजस्ट कर सकते हैं। मैं अभी आपको नहीं बताऊँगा, वरना आप जाके खुद ही एडजस्ट करना शुरू कर देंगे।
तो इसको HbA1c कहते हैं, जो आपको पिछले 3 महीने की शुगर कंट्रोल का है, ब्लड टेस्ट होता है, वो पता चलता है कि आपकी शुगर कितनी कंट्रोल है। तो उसके मुताबिक हम आपकी दवाइयाँ एडजस्ट कर सकते हैं, कौन सी दवाई सुबह लेनी है, कौन सी दवाई सहर में लेनी है, कौन सी अफ्तार में लेनी है। इवन इंसुलिन को भी एडजस्ट किया जा सकता है अगर आपका डायबिटीज़ कंट्रोल ठीक है, ठीक है। लेकिन बेस्ट वे टू आस्क योर डॉक्टर and also try not to manipulate with your medicines and try not to take risk to deteriorate your medical conditions. Exactly. अच्छा, जहाँ तक हम डायबिटीज़ की बात करते हैं वहाँ कार्ब्स ज़रूरी होता है, क्योंकि अक्सर बेशतर कार्ब्स जो है वो इंसान की बॉडी पे बहुत यूनिक इफेक्ट डालते हैं, और डायबिटिक पेशेंट्स को कहा भी जाता है कि कार्ब्स कंट्रोल करो। वैसे भी अगर हम कार्ब्स कंट्रोल करेंगे तो जैसा बंदा जो कि ज़्यादा मोटा हो गया वो थोड़ा कम हो सकता है जो कि आप अक्सर बेशतर बोल सकते हैं। तो कार्ब्स के बारे में बताएं कि हमें किस किस्म की कार्ब्स कट डाउन करनी चाहिए, स्पेशली इन द मंथ ऑफ रमज़ान, क्योंकि रमज़ान के अंदर हम फास्टिंग की हालत में होते हैं, हम आराम से अपने खाने को कंट्रोल कर सकते हैं। कार्ब्स तो मैं वैसे बताऊंगा कि हमें कार्ब्स को वैसे भी नहीं इतना ज़्यादा लेना चाहिए, रमज़ान में तो बहुत ख्याल रखना चाहिए। कार्ब्स को उर्दू में स्टार्च का नशास्ता कहते हैं, ओके, नाश्ता नहीं कहते बल्कि नशास्ता कहते हैं, ठीक है। नशास्ता डिफरेंट है, स्टार्च भी कहते हैं। ये आपकी चपाती हो गई, आपकी राइस वगैरह हो गए, ये कार्ब्स है, ठीक है। आप कोई भी चीज़ लें जिसमें शुगर्स बढ़ा हुआ है, आप कोई भी चीज़ लें ना जब शॉप से जाके या सुपर स्टोर से जाके, उस पर सिर्फ एक आप काम आज करें, सिर्फ एक काम कि उसकी ग्लूकोज कंटेंट देख लें, ग्लूकोज कंटेंट कितना है। अगर ग्लूकोज कंटेंट ज़्यादा है, अगर वो ग्रीन में नहीं है तो आप छोड़ दें उसको, उसमें कलर लिखे होते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम क्या होता है कि कार्ब्स जब लेते हैं तो जिस्म के कार्ब्स को ग्लूकोज बनता है जब जिस्म में, तो ग्लूकोज को खर्च करने के लिए इंसुलिन ने उसको किक करके ऐसी जगह लेके जाना है जहाँ पे उसकी ब्रेक डाउन हो, जहाँ पे एनर्जी रिलीज़ हो। जब आप बहुत ज़्यादा चपातियाँ खाएंगे, चावल लेंगे और ऐसी चीज़ें खाएंगे जिनमें ग्लूकोज है, बिस्किट्स हो गए, ठीक है, आप जिसमें भी ग्लूकोज ज़्यादा है, अब लेंगे तो क्या होगा कि इंसुलिन को बार बार काम करके उसको आगे भेजना पड़ेगा ताकि उसकी ब्रेक डाउन हो, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हो। तो एक टाइम आता है कि ग्लूकोज आपके जिस्म में इतना ज़्यादा हो जाता है कि इंसुलिन नैकेड हो जाता है, इंसुलिन काम नहीं कर सकता। तो ऐसे वक्त में लोगों को डायबिटीज़ हो जाती है, और जब डायबिटीज़ हो जाती है तो ये इरिवर्सिबल है, ये कभी ठीक नहीं हो सकती, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक नहीं हो सकती। तो इस वजह से कार्ब्स कम लेना चाहिए ताकि इंसुलिन को कम करें। और हम जैसे लोगों में इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है क्योंकि हम कार्ब्स बहुत ज़्यादा लेते हैं बचपन से, तो इंसुलिन को बार बार आके काम करना पड़ता है। ये ऐसे ही है कि फॉर एग्जांपल अगर आप हेडफोन इस्तेमाल कर रहे हैं वॉल्यूम के लिए और आप इतना अर्सा इस्तेमाल करते रहें और एक टाइम आके आपके कान की हीरिंग ख़त्म हो गई है और आपको वही इफेक्ट सुनने के लिए आपको और बड़ी पावर के हेडफोन चाहिए और आवाज़ बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। एग्जैक्टली ग्लूकोज में भी ऐसे होता है कि जिसमें जब आप बहुत ज़्यादा रोटी खाते हैं, चाय बिस्किट खाते हैं या राइस वगैरह खाते हैं, तो बार बार खाते हैं, तो बार बार इंसुलिन को काम करना पड़ता है और इंसुलिन सम टाइम आके नैकेड हो जाता है, बेबस हो जाता है, उसको डायबिटीज़ कहते हैं। इस वजह से अगर आप रमज़ान में भी ग्लूकोज कम इस्तेमाल करेंगे, शरबत वाली कम इस्तेमाल करेंगे, मीठी चीज़ें कम इस्तेमाल करेंगे, शुगर चीनी वाली चीज़ें कम इस्तेमाल करेंगे, चपातियाँ कम खाएंगे, चावल कम खाएंगे, तो ये इसका मतलब है कि आप ग्लूकोज और कार्ब कम कर रहे हैं। तो आपके जिस्म में थोड़ी सी एक्टिविटी ज़्यादा बेहतर तरीके से पैदा होगी और इंसुलिन को थोड़ा टाइम मिलेगा रिलैक्स होने के लिए। सही। अच्छा ताहिर भाई, जो अभी आपने बहुत अच्छी बात बताई कार्ब्स के लेके, और बहुत सारे लोगों के इस बारे में मिसकॉन्सेप्शन है कि भाई मिठाई कम कर लोगे तो डायबिटीज़ कंट्रोल आ जाएगी, शक्कर कम कर लोगे तो डायबिटीज़ कंट्रोल आ जाएगी। लेकिन कार्ब्स एक उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है कि अगर उसको कम नहीं करेंगे, उसको रेगुलेट नहीं करेंगे तो मैं आपको बताऊँ, ब्रेड का एक पीस खाएंगे ना आप, एक पीस ब्रेड का जिसको डबल रोटी कहते हैं, जी, वो खर्च करने के लिए आपको एक मील चलना पड़ेगा। एक समोसा खाएंगे ना, तला हुआ समोसा, एक तला हुआ समोसा खाएंगे तो आपको 1.5 माइल चलना पड़ेगा, रन करना पड़ेगा वो जो एनर्जी खाई है। बाकी मैं आपको स्वीट्स की बात नहीं कर रहा, मिठाइयों की बात नहीं कर रहा, रसगुल्लों की बात नहीं कर रहा, गुलाब जामुन की बात नहीं कर रहा, खीर की बात नहीं कर रहा, जर्दे की बात नहीं कर रहा, ये सब लगता है नहीं। मैं आप कुछ भी खाएं लेकिन थोड़ा सा एहतियात करके खाएं, ये चीज़ें कम खाएं, ठीक है। और जिसमें प्रोटीन ज़्यादा है वो खाएं, चिकन है, फ़िश है, मीट है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको सेहत इजाज़त देती है तो, ठीक है। और दाल वगैरह इस्तेमाल करें, लेग्यूम्स, सब्जियाँ हैं, वो बेस्ट हैं आपके लिए। अच्छा, जहाँ तक बात होती है दूसरी चीज़ों की, यानी
वो ख़वातीन जो कि प्रेग्नेंट हैं और सबसे ज़्यादा बात होती है उनकी कि भाई आया वो रोज़ा रख सकती हैं नहीं रख सकती हैं, इसकी एक डिबेट तो है ही, जो इल्मी डिबेट है वो अलग है, लेकिन मेडिकली तौर पे एक प्रेग्नेंट वुमन क्या फास्ट कर सकती है, स्पेशली इतना लंबे फास्ट, लेंथ ऑफ द फास्ट? शॉर्ट आंसर है इसका नो। और लॉन्ग आंसर ये है कि जब आप प्रेग्नेंट थे तो आपके अंदर बेबी है, तो आप एक नहीं आप दो हैं, और बेबी आप पे डिपेंड करता है, आप जो कुछ खाएंगी वो बेबी के अंदर जाएगा, ठीक है, पानी पिएंगी, दूध पिएंगी, खाना खाएंगी, बेबी उनमें उसमें से थोड़ा थोड़ा लेता रहे वो कॉर्ड के थ्रू। तो अगर आप स्टार्व करेंगी, फास्ट करेंगी, तो बेबी क्या करेगा? ठीक है, बात है, उसको मसला तो होगा। बेहतर होगा कि आप जितनी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, मेरी बहन है, मेरी नीसीज़ हैं, मेरी जितनी भी हैं, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो प्लीज़ डू नॉट फास्ट। दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। You are starving your baby inside you, is gonna affect her growth or his growth, is gonna affect every single part of the baby inside you. तो बेबी आप पे डिपेंड करता है कि आप पानी दिएंगी बेबी के पास, आप जो कुछ लेंगी वो बेबी के अंदर जाएगा, एंड इसलिए बेबी ग्रो होगा। अगर आप फास्ट करेंगी तो बेबी की ग्रोथ पे बहुत बुरा असर पड़ेगा, और डिलीवरी के बाद भी आप इसका असर देखेंगी। तो मेरी आपको एडवाइस है, अगर आप सुन रहे हैं तो आप फास्ट ना करें। अगर आप मर्द हैं, सुन रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, आपने मिसेस को अगर प्रेग्नेंट है उसको बताएं। अगर आपकी बेटी प्रेग्नेंट है, अगर आपकी बहू प्रेग्नेंट है, आपकी बहन प्रेग्नेंट है, उसको बताएं कि फास्ट देखा फास्ट, बिकॉज ये इज़ नॉट गुड फॉर देम। ठीक है, मेरे नज़दीक ये बहुत बड़ा ऑफेंस है। अच्छा, जहाँ तक हमारे जो दूसरे पेशेंट्स होते हैं लॉन्ग टर्म कंडीशंस वाले, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है या किडनीज़ की प्रॉब्लम होती है, और अगर वो फास्ट करना चाहते हैं स्पेशली इन द मंथ ऑफ रमज़ान, क्योंकि आपकी डिहाइड्रेशन उनमें ज़्यादा किक इन होती है, पानी की मिकदार कम आप ले रहे होते हैं, तो उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है कि वो क्या करें? डायबिटीज़ के लोग जो है वो बेसिकली उनको, जैसे मैंने पहले बताया कि आपको रमज़ान में नहीं सोचना चाहिए, रमज़ान से पहले सोचना चाहिए। 1 महीना पहले जाके अपना ब्लड टेस्ट करवाएं, आप देखें आपकी HbA1c कितनी है, तो डॉक्टर आपको बताएगा कि आप रोज़ा रखने से आपको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। आप स्पिरिचुअली तो फील करेंगे कि मुझे रोज़ा रखने से स्पिरिचुअल फ़ायदा होगा, लेकिन एक्चुअली अगर आपकी शुगर अनकंट्रोल्ड है तो क्या होता है कि आपको जिस्म में पूरा दिन आपकी एनर्जी नहीं जाती, ठीक है, और जब अफ्तारी का टाइम आता है तो इतनी ज़्यादा एनर्जी चली जाती है सॉरी, इतनी ज़्यादा एनर्जी चली जाती है कि आपके दिमाग पे असर पड़ सकता है, आपकी आइज़ पे उसी वक्त असर पड़ सकता है, आपके हार्ट में भी असर करता है, फालज का अटैक भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है, और ब्लाइंड भी हो सकते हैं, और स्ट्रोक भी हो सकता है, क्योंकि आपके जिस्म में ऑलरेडी इंसुलिन कम है, काम नहीं कर रहा। तो ये आपके जिस्म में जब ये सारी चीज़ें जाएंगी तो आपके जिस्म में ब्लड नहीं होगा बल्कि शीरीनी होगी, शरबत होगा, आप मीठे हो गया। हाँ, तो ये जिस्म के जहाँ जहाँ सेल में जाएंगे वहाँ पे डिस्ट्रक्शन करेंगे। तो इसलिए आपके बेहतर है कि चूँकि आप पूरा दिन खाना कुछ नहीं खाया और शाम को आपने किया और उसके बाद आपने नमाज़ पढ़नी है और फिर आपको सहरी को फिर खाना है, तो ये इस तरह काम नहीं चलेगा। आप सिर्फ़ और सिर्फ 1 महीना पहले चेक करें और डॉक्टर से पूछें, वो आपकी दवाइयाँ एडजस्ट कर देगा अगर पॉसिबल हुआ तो। सो जो हार्ट पेशेंट्स हैं या किडनी पेशेंट्स हैं उनको क्या करना चाहिए? सिमिलरली किडनी जो ख़ासकर जिन लोगों को स्टोन्स की प्रॉब्लम होती है या जिनका किडनी फेलियर है, एक ख़ास हद तक है, तो वो तो नहीं रख सकेंगे, ठीक है, लेकिन जिनको किडनी स्टोन्स है वो भी नहीं रख सकते, क्योंकि डिहाइड्रेशन से स्टोन बड़े हो जाते हैं, तकलीफ़ हो जाएगी। इसी तरह गोल्ड स्टोन की प्रॉब्लम होती है। इसी तरह कई लोगों को गाउट होता है जिसको फास्टिंग करने से या मीट ज़्यादा खाने से या कुछ करने से, तो उन लोगों के लिए बड़ा, क्योंकि पानी पीना ज़रूरी होता है उनके लिए। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि पहले अपने डॉक्टर से जाके महीना पहले जाके बात करें और फिर करें। ये प्रिपरेशन होती है रमज़ान की, मिडल ऑफ रमज़ान की प्रिपरेशन होती है। जब बीमार हो गए और आपको घर वालों ने कहना शुरू कर दिया, आपकी दवाई के साइड इफेक्ट होना शुरू हो गए, उस वक्त आपको याद आएगा नहीं, 1 महीना पहले जाके बात करें और फिर आप उसको अच्छी तरह रोज़े करें। हो सकता है वो रोज़े जो आप रखें आपके लिए बेहतर हों, लेकिन अगर ये गारंटी है कि अगर आपकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, आपको हार्ट प्रॉब्लम है और आपकी किडनी की प्रॉब्लम है और आपको कोई और प्रॉब्लम्स है जो लॉन्ग टर्म कंडीशन जिसमें आपको मेडिसिन चाहिए, पानी पीना चाहिए, ये गारंटी है कि आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी रमज़ान में। अच्छा ताहिर भाई, एक चीज़ तो है कि अक्सर बेशतर हम जब रोज़ा रख रहे होते हैं तो हमारी तबीयत थोड़ी हल्कान हो जाती है, तो क्या हम कोई वाइटामिन ले सकते हैं? कोई ऐसी वाइटामिन हैं हमारे लिए
टू इंश्योर दैट हम जो है वो ऐसी कोई विटामिन सप्लीमेंट्स है जो कि आप रेकमेंड कर सकते हैं, जैसे कि विटामिन डी हो गई या दूसरी और चीज़ें हो गई जो आप रेकमेंड कर सकते हैं कि हाँ हमें लेना चाहिए टू हैव ओवरऑल हेल्थी हेल्थ? इसका जनरल रूल तो यही है कि जो भी ब्राउन स्किन के लोग होते हैं जी, उनके अंदर विटामिन डी की कमी होती है, इतनी ज़्यादा नहीं बनती, तो हमें एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। वो हम सबको कहते हैं कि आप खुद जाके लें, मैं भी खाता हूँ, सारे खाते हैं सब विटामिन डी। इसके अलावा विटामिन B12, फोलिक एसिड, आयरन, ये चेक करना पड़ता है। लेकिन जनरली ये है कि अगर आप मल्टीविटामिन के लें, जो आप ले लें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा, स्पेशली आपकी मेमोरी के लिए बहुत बेहतर होता है मल्टीविटामिन। खासकर नट्स लें, कैश्यू नट्स लें, आलमंड्स लें, ये जो चीज़ें होती हैं ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, लेकिन मॉडरेट अमाउंट में, कुछ दाने डेली में, ठीक है। और जो चीज़ रहेगी ये विटामिन डी आप भी ले सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊँ कि जो बेस्ट डाइट जो है आपके रमज़ान में, आपकी इफ्तारी में और सहर के लिए, वो एग है, ठीक है। अच्छा, बेस्ट प्रोटीन है, बेस्ट प्रोटीन है। 2-3 एग्स में से कम 2 एग्स आप ले सकते हैं, और सही में? 3-4 एग्स में से बाकी 1-2 में से आप वो पीलिक निकाल लें, वो जो वाइटिश पार्ट है, और उसके साथ एक आध पीलिक ले लें, बेस्ट है आपके लिए एनर्जी, ठीक है। फ्री भी है और आपको इसकी कॉस्ट भी कम है, आपके जिस्म में ज़्यादा देर रहेगी, आप अच्छा फील भी करेंगे, एनर्जी आपके जिस्म में थोड़ी रिलीज़ होगी। कार्ब्स का मसला होता है कि आप जो ही आपने चावल खाए, रोटी खाई, पीक किया उसने जिस्म में, और उसके बाद उससे कम होना शुरू हो जाएगा, लेकिन जो पीक करेगी वो ख़तरनाक होता है। आपको एनर्जी चाहिए फास्टिंग में जो स्लोली रिलीज़ हो। एग्स हो गए, योगर्ट हो गई, सब्जियां हो गई, इस तरह की ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होगी, मीट हो गया, ये जो चीज़ होती है ना, आपको स्लोली और थोड़ी एनर्जी आपको पूरा दिन देते रहते हैं। ऑन दैट नोट ताहिर भाई, वाओ द टाइम हैज़ पास्ड रियली क्विकली। हम लोग अभी बस ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, और जब ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो हम लोग नीचे जाएंगे और लोगों से पूछेंगे कि उनका कैसे गुजर रहा है रमज़ान, और वो किस तरीके से अपने रमज़ान को हेल्थी बना रहे हैं, और उसके अलावा दूसरी चीज़ों के ऊपर भी हम बात करेंगे। स्टे ट्यून, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट मैसेजेस। थैंक यू। Assalamu alaikum and welcome back to the Health and Fitness Show. I'm your host Fahad, recording this show live from the streets of Buripal in the month of Ramadan. And this is the first Ramadan show for a Health and Fitness Show in Inspire FM. In our first half of the show, we were having a discussion with Dr Tahir Mehmood regarding our healthy diets, exercise, and the healthy look after of our health and well-being in the month of Ramadan. Now this side of the show, we will be speaking to different members of public, and we will be speaking to them and finding out what make their Ramadan healthy and how they can look after their health and well-being. I'm not the one who will be talking whole show. It will be Dr Tahir Mehmood who will be interacting with people, member of public, and the member of public will be asking live questions to him, asking different health related topics and how they can look after their health and well-being in the month of Ramadan. So over to you, Tahir bhai. राव साहब, हाउ आर यू? कैसे जा रहे रोज़े? ठीक है। क्या खाते हैं रोज़े में? डॉक्टर साहब सुबह के टाइम मोस्टली एग होते हैं, और शायद चाय भी होती है माशाल्लाह। और कभी कभी, अभी तो 2 रोज़े में है, ज़्यादा तो नहीं हुए, लेकिन आहिस्ता। थोड़ा सा जो है ना वो राइस हो गया, देसी बनते हैं, कभी कभी रोटी भी जाती है साथ, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि इसमें वो थोड़ा सैलड ऐड करूँ, फ्रूट और सैलड में ऐड करूँ मॉर्निंग टाइम में। तो ये मेरी कोशिश है, अभी नेक्स्ट देखेंगे क्या हो रहा है। अरे बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छी बना रहे हैं। डाइट आपकी बैलेंस लगती है, बैलेंस करना चाहिए। कोशिश करें कि फ्रूट वेजिटेबल्स आप ज़्यादा लें, और अंडा बहुत अच्छा है एनर्जी के लिए, प्रोटीन है। अंडे में सॉरी, ये कौन सा लें, बॉयल एग लें या दूसरा अपना जो आपको पसंद आता है, एक आध फ्राई लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन बॉयल जो अंडे वो आपके बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे। आप 2-3 अंडे ले सकते हैं, उनमें से आप एक आध की पीलिक ले लें, बाकी 2-3 की आप वाइटिश पार्ट जो ले लें, ठीक है। तो ज़बरदस्त ये फुल ऑफ प्रोटीन्स है, आपको आहिस्ता आहिस्ता करके एनर्जी देते रहेंगे बिल्कुल डे में। चाय पीनी है, अगर आपने शुगर की बगैर चाय पिए, चाय शुगर फ्री क्यों पीते हैं आप? नहीं, विदाउट शुगर, शुगर फ्री। हाँ, शुगर फ्री चाय भी, ये बहुत अच्छी बात है। फ्रूट वेजिटेबल खाते हैं तो प्लस ज़बरदस्त आप बहुत माशाल्लाह वेरी हेल्दी है। तो क्वेश्चन डॉक्टर साहब 2 क्वेश्चन है। ये जो सुबह का जो हमारा जो शहर का है, हम वहाँ ज़्यादा अमाउंट में फूड लें या जो शाम को जिस अफ्तारी के बाद लें, इसमें थोड़ा हमें बताएं कि ज़्यादा सुबह के टाइम लें या शाम के टाइम लें। ये ज़बरदस्त क्वेश्चन किया और बड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। ये प्रॉब्लम ये होता है कि अफ्तारी में हम हर चीज़ और हर शय खाना चाहते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास बड़ा कम विंडो टाइम होता है, सोने का भी, तरावी का भी और शहरी का टाइम भी होता है। तो इस वजह से हमारे पास बहुत कम होता है। मैं आपको एडवाइस करूँगा,
आपकी जो डाइट है उसमें आप कम से कम 60% 70% आप इसको लिया करें अफ्तारी में, और आप बाकी जो है ना 70 to 80% जो है ना वो आप सहरी में लिया, क्योंकि ड्यूरिंग द डे आपने काम करना है, आपने भागन दौड़ना है और आपने भूखा रहना है, नमाज़ पढ़नी है, ठीक है, तो उसके लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है। आपका मतलब सुबह इनटेक ज़्यादा लें और आप शाम को कम लें, ये लेकिन अगर आपने शाम को इतना ज़्यादा खाना खा लिया है तो सुबह की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ऐसे ही होता है ना, मोस्ट होता है, ये मोस्ट होता है, ऐसे ही होता है। तो आप जो भी खाना खाएं आप मॉडरेटली लें, शाम को अफ्तारी के वक्त आप अच्छी ग़िज़ा लें, आपने काफ़ी पढ़नी है, सोना है आपको, ठीक है। इस वजह से आपको ये नहीं होगा आपका पेट भरा हो, आपके अंदर जिसम में इतनी कैलोरीज हो तो आप बेहोश, आप नींद में बेहोश हो। लेकिन आप सहरी के दौरान आप अच्छी खासी ग़िज़ा ले सकते हैं ताकि आपका पूरा दिन आपको एनर्जी मिलती रहे और फ्रेश, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम जिम जा सकते हैं रमज़ान के दौरान, और टाइमिंग क्या है हमारी, ड्यूरिंग फास्टिंग करें या लेटर आफ्टर फास्ट करें? अगर सहरी अगर अफ्तारी के बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप जिम जाएँ तो ये आपकी बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि अगर आपने बहुत ज़्यादा हैवी अफ्तारी कर ली है तो आप जाके एनर्जी आप मुझे इसका वर्क सेट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आपने अगर सहरी अच्छी नहीं की हुई तो आप जिम पे जाए, आप वॉक कर सकते हैं, वॉक नॉर्मल वॉक कर सकते हैं, 2-3 मील की वॉक माइल की वॉक कर सकते हैं, वो भी अच्छी है। लेकिन अगर आप अफ्तारी आप डबल ट्रिपल करके खाते हैं तो फिर आपको तो जिम बनता है, ठीक है। इसलिए यू नीड बी वेरी वेरी केयरफुल फॉर, ठीक है। डॉक्टर साहब लास्ट क्वेश्चन है कि हमें रूटीन में पर डे कितने मिनट बाद करनी चाहिए रमज़ान के अलावा अगर आपको वॉक करनी चाहिए तो कम से कम अगर आधा घंटे की वॉक करें आप, और उस वॉक में आपको तेज़ ब्रिस्क वॉक करनी चाहिए और आपको स्वेटिंग होनी चाहिए और आपका दिल तेज़ दर्द चाहिए, ठीक है। तो आपको बहुत ज़रूरी है। और अगर आप 2 घंटे के वीक में कर लें, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन बेस्ट तरीका ये होता है कि आप वॉक उस वक्त करें जब आप किसी क्षेत्र रोड पे आप वॉक करेंगे, एक तो खतरा है, उससे जितनी गाड़ियों की पोल्यूशन आपके अंदर जाएगी। मोस्टली बेहतर है पार्क में जाके, ठीक है, इस साइड एरिया में जाके वॉक करें और ग्रुप के साथ वॉक करें, फिर आपको इनिशिएटिव मिलता है, आपको बूस्ट मिलता है, आपकी कंपनी होती है, गप्पे मारते हैं और ये हेल्दी एक्टिविटीज है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी रमज़ान, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। How are you? How's Ramadan? All good. All Busy good. here? Very, very busy. Very busy. All the Non-stop. day? Non-stop. Non-stop. What time you close the office? Closing at 5:30 today because fast breaks at 6 o'clock, so about half an hour earlier. How are you going to break your fast? Plan is today to have some dates and water, and then I think Mum's made some pakoras, samosas, and all that stuff. So dig into that, and then maybe some fruit on the side, and then see what she has for mains. So what's the main course? Find out today. Hopefully roast chicken, something a bit healthy, maybe some vegetables on the side and some rice. That's really good. Cheesy. And say, you don't eat say, do you? Said porridge. Really? Cheesy. That's very healthy. Well done. Very nice. So this is, I think that it's very, very good because pakora samosas, I don't recommend it because of the fried food. They're all carbs and glucose, and the quality of food in pakora samosas probably is not good. But what you mentioned just now, celebrating food, is really, really good. And he's a gym enthusiast. He looks after himself really, really well. So I'm pretty sure that he is going to be very fixed on his diet and roast, and he eats a lot of proteins. That's really, really good. So that's really good. I'm very impressed. Thank you very much, Mum. Ladies, any questions for us? What do you recommend to eat for Sahri? Whatever your mum says, don't. Okay. Whatever your mum says. I know you, mum. She must have made pakora samosas for you. That's fine. But I think you take 1 or 2. That's fine. But I think that's the things. Dates are good, and you'll be eating dates anyway. So yeah, dates and water is good. Try not to drink too much sugary stuff. Sugary food. Eat high nutritious diet like roast meat and legumes, dals, vegetables. Yeah. Really good. Thank And you. eggs as well. Thank you Very very nice. much. So we are in the middle of Bury Park. Yes. We see a lot of community, diverse community. They are hitting up shopping for Ramadan, and they're eating a lot of things, fruit, vegetables. So it's very lovely to see that people are happier and they are with the families. They are trying to get everything possible: fruit, vegetables, meat, chicken, fish, and sweets. I can see a lot of big snacks as well. It's really, really heartening to say, warm heartening
my heart is really feeling warm to see that people can afford these things. That's really, really good. The only thing you need to decide whether are you buying something which is good for your health and your family's health. This is very bad. So, Tahir bhai, we have fruit shops over there. If you walk towards this way, we can see that there are fruit shops. So, I do like to ask and find out a bit more about what are the best fruits for us. Okay, all sort of fruits are really, really good. One apple a day, the doctor's away. Look up these oranges here, tangerines here, a lot of fruits, so much variety of the fruit here. I think fresh fruit is the best for Afghani and some of the both of them because they are high in energy, proteins, fibers, and as well as the carbs. And also very nutritious for you. I wish I could buy these, come here, if you got a chance to come here and buy the fresh fruit every day. This is really, really good. My advice to you for this Ramadan, try to eat as much as fruits and healthy diet as much as possible and cut down the carbs, okay? And carb is not going to be good for you. Cut down the sugars, sugary drinks, fizzy drinks, all this good for you. Every time you buy any product, look at the sugar content of it. If the sugar content is not in green, don't buy that for yourself, not for even for your enemies. Okay, it's not going to be good for you. It's a high risk of causing more problems inside your body, health disorders. Okay, when you see any product in the superstores in the shop, it now is a legal requirement that they will write down how much sugars in there, carbs in there, and also how much protein and fats in there. So it's very, very important that you take a few seconds to look at that and make a habit of that. Okay, if you make a habit of that, you'll be choosing much healthier. When we talk about the general fruit and vegetable, we always talk about meat as well. So in terms of meat, what meat products do you think we should be having on a daily basis? Take a lean meat which has got less fat in it and try not to cook it and fry it. Make steaks, and also if you can grill it, that's going to be best. If you fry the meat or the chicken and eat it, then it's not going to be good for you, it's not going to be healthy for you. Okay, the best thing is to make little steaks, like you can eat a couple of times a week, and then other times you can take chicken, maybe fish as well. So all three things are really, really good if you can afford it. Otherwise, go to lentils, peas, dals, legumes, vegetables. Yeah. Thank you so much, Tahir bhai. Thank you so much for joining us. Thank you so much for all your insight in and thank you for your cameraman as well. And do you like to give a positive message for our lovely listeners? Happy Ramadan to everyone. I hope you're going to look after yourself and your families. Please make sure that you eat healthy, okay, whatever you can afford, and you choose the best diet for you. Like for example, oat is the best for you, and the oat porridge at Saturday time is going to be best for you. It's going to be releasing slow energy in your body during the daytime. Okay, and eat fruit and vegetables, and no pakoras, no samosas for you, no fried food for you. They're not good for you. So when we are talking about healthy food, grilled food is one of the best things. And Alhamdulillah, we are in one of the local shops at Coffee and we are doing a nice lovely grill. My brother, Assalamu alaikum brother, how are you? Salam brother, how are you? Ramadan Mubarak. Ramadan Mubarak to you as well. Firstly, do you introduce yourself, because I always... Solcom, thank you for coming, Inspire FM. Thank you, Inspire FM. By the way, my name is Talha Ahmed. Everybody knows me as Mr. T. We run the coffee for a few other businesses here. And I've been doing this for the last 15 years in Luton. And I claim that I'm the first one in the country to do the street food outside basically outside the premises. So I created this about 2009. And we've been doing this in Luton. We cook basically, you can see it. A variety of food. 30 days of Ramadan. We cook freshly kebabs, chicken, tandoori chicken. We got all this lambs, chops, wing, pakoras, everything. You name all the Asian food in Ramadan. We've got everything, and we freshly make, we freshly cook, and we're doing this for the community for the last 15 years. And alhamdulillah. Thank you. In terms of the, as we know, grilled food is one of the healthiest food people can have. So what do you tell about the grilled chickens and the grilled kebab? How healthy they are, and what kind of people normally like to have? Do they love to have chops more than grilled chicken, or they like to have kebab? The people likes mainly my barbecue wing, famous barbecue wing, mango wing. We got the sticky Chinese sweet and sour wing. We got the kebabs, the best kebabs in town, by the way. It's chicken kebab, we got the lamb kebabs. That's
that's the healthy option of it. Yeah. But I cannot claim everything is healthy. Definitely. Because, We have lovely no, people. we go freshly made pakores, samosas, but I cannot claim that healthy, by the way. Exactly. But these products, what we sell, definitely healthy. We created, you know, this is 100% healthy. Grill, we steam cooked it, then we grill it. So I can say that it's a very good for health. So, Mr. T, what do you reckon? So, if a person comes to you, a normal street person comes to you, and he is a health freak, and they say, no, I need some healthy pasta. What was the first recommendations which you will give to them? Say, okay, these are the healthy items. Which one you prefer? I'll tell them to straight away have my kebab, have my tandoori wing, barbecue wing, mango wings, and chicken, tandoori chicken. That's my healthy option, you know. In your personal opinion, in your normal diet wise, after and sorry, what do you like to eat? Prefer? I love grills, to be honest. You know what? And I can't say it. I have to have a bit of pakora, by the way. You know, otherwise it'll be, you know, it's fasting. You won't be tasting without pakora. We have to have a little bit of pakora. Samosas definitely, but I personally prefer my khichdi and a bit of chana and some grilled stuff like kebabs, tandooris, barbecue wings, things like that. But you have to have a bit of pakora. Definitely. We can't have it We cannot complete a Ramadan without we can't, pakoras. we can't. Exactly. So, if I like you to give you a quick message about Ramadan to our lovely people in terms of having a healthy, fresh food, what do you reckon to our lovely people? You know what? Firstly, I'll tell the whole of Muslim Ummah and Inspire FM and the whole Luton community, Ramadan Mubarak once again. You know what, brothers and sisters, Ramadan for, you know, just not for food. Make the most of it with your deen and iman. You know, try to go to Salah in 5 times in the masjid. And food-wise, you know what, I do grill. I'm known for grill. So I will say, come and try my grill food. And if you want, you can have some pakoras, no problem. But the grill. Jazakallah, Mr. D. Thank you so much, bhai. Thank you very much. Thank you very much for giving. Thank you once again for Inspire FM and all of you coming. Thank you. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, Sulaiman. Walaikum salam wa rahmatullah, Fahad. How are you, my brother? Alhamdulillah. How are you, my brother? Alhamdulillah. Health and fitness show out Mashallah. there cannot be completed without your presence, bro. Alhamdulillah, brother. So, how's things? How's happening? Shukr, alhamdulillah, man. Ramadan's here, man. We've been looking forward to it, and now it's here. Alhamdulillah. Now, as we all know, Brother Sulaiman is my co-host and a public health lead as well. And definitely, when it comes to Ramadan, we have certain messages for the public and for the betterment of health and well-being as well. Because Ramadan is the best month, isn't it, bro? Alhamdulillah. No doubt about that. It's the best month. Exactly. So, Sulaiman, one of the things which health-wise, one of the campaign which is run throughout is quit smoking as well. So, what's your take on that, and how come Ramadan is so fruitful for that side? So, yeah, so I mean, the reason it's so fruitful is because you know, alhamdulillah, everyone's fasting, and obviously, as everyone knows, when you're fasting, you can't smoke. So by default, you can't smoke for the vast majority of the day. So it's the perfect opportunity to use the fact that you're not smoking for such a long period of time to quit for good. So mashallah, my colleague Henna, she's done an amazing job on this year's Ramadan 2024 campaign, working with Total Wellbeing, and adverts, hopefully you're hearing them on Inspire FM as well. So there's an opportunity there for anyone that smokes to quit for good. So why not take that opportunity? And there's a special text code and number that you can call, and you visit the website Total Wellbeing Luton. There's more information there as well. So, other than that, how do you spend your Ramadan? I have a privilege of opening a couple of fasts with my brother a few years back, and I know it's a complete different environment in our own household. Yeah. So, give us a quick insight of how do you maintain a healthy diet plan in your life? Because I must say, you look exactly like it is since I know you since last 5-6 years now. You know, alhamdulillah, brother, we have to be realistic. Yeah. You know, and we have our cultural foods. Yep. You know, and there's no shame in that. Alhamdulillah, it's beautiful. It's a beautiful thing that we get to sit down as a family
And alhamdulillah, you know, the most important thing, more important even I would say than the food, yeah, is coming together as a family, and alhamdulillah, respecting the fact that shukr alhamdulillah, we've got food on our tables, you know, and so many people don't, sadly. So, you know, first and foremost is shukr alhamdulillah, whatever we have, we've got. And obviously, you know, the sunnah is with dates, alhamdulillah, which obviously is a sign around eating more fruit, other fruits as well, strawberries and bananas, and shukr alhamdulillah, all the food that we get easy access to in this country. And obviously water is well recognized to try and stay hydrated. So alhamdulillah, it's just keeping it simple. I don't think it's anything people don't know. Yep. 1 second, yeah, just wait. Perfect. So yes, while on the topic of water, now I know there is a limit. I was speaking to Dr. Tahir Mehmood earlier as well, and he was mentioning that at least 2 to 3 liters of water need to be intake. What's your take on that, and how much water do you take? Yeah, completely agree. And I think you know, the only thing to add is there's no point downing 2 liters of water in one. Well, there is a point, but the better thing would be to try and drink it throughout. So, you know, brothers take water bottles for tarawih and things like this. It's better as much as you can to try and sip it. But ultimately, however you do it, it's about getting the intake in. You know, whatever works for you. Personally, you know, I probably don't get as much as I should, you know, but that's not to say that what the doctor said isn't correct. Exactly. And in terms of the healthy diet plan, I know one of the things, your portfolio as a public health person clearly states about healthy diet plan and healthy lifestyle. Yeah. How can we, as a normal human being, Lutonians, as you know, the topic of our show today is healthy Ramadan in Luton. So how can we Lutonian can able to have a healthy Ramadan and have a healthy lifestyle and diet plan, especially in the month of Ramadan? Because you know, whenever we go to any of our events, the open iftar and all those things, and inshallah, Inspire FM will be doing an iftar as well. The big iftar is coming up next Friday. So how do we, as a Lutonian, can able to look after ourselves and especially our diet and lifestyle? Alhamdulillah, it's a great question, and I think, you know, the principles are, as I say, fruit and vegetables as much as you can. You know, if you can, like chane, dal, you know, alhamdulillah, my mum loves chane dal, you know, and that's such a great healthy food. Indeed. So it's just going back to basics really, you know, but as I say, be kind to yourself. What's realistically, you don't want to spend hours cooking. That's not the purpose of Ramadan. The purpose of Ramadan is to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala through worship and through reading Quran and through these things. It isn't to spend 4 hours making nahari because Fahad likes nahari, you know. So I love that. I love nahari as well, you know. But as I say, the point is that just be kind to yourself, be realistic. If you can add a little bit of fruit, if you can add a little bit of salad, cucumber, you know, for example, chop up a bit of cucumber, add it on the side, you know, that will help as well with the water intake, you know. So watermelon, alhamdulillah, you know, we're in Bury Park now, yeah. Look at how amazing fresh fruit and vegetables you get. Every fruit and vegetable under the sun, you know. And car alarms. Well, that's the beauty of Bury Park, isn't it? You can see anything and everything over here. Alhamdulillah. So when we talk about food itself, now I know there's a 5 a day. I know Brother Leo is always mentioning 5 a day or 7 a day food. So how can we incorporate that much amount of food in our healthy diet? Yes. So I think the important thing to remember is 5 a day is for fruit and vegetables. Okay. You know, so for example, if you can add a bit of lettuce, you know, if you can add a bit of tomato, whatever it might be. So it's not just, you know, you have to eat bananas, for example. You know, you can have all these different varieties. So as I say, alhamdulillah, whatever you like. You know, find what you like. Mashallah, my little boy, he's 3 years old. The kid loves strawberries. Oh yes. Alhamdulillah, he loves strawberries. Give him strawberries. Go where it's easy, right? We're all parents. We're all busy. And I'm not saying you have to cut fresh avocado
that costs £4 an avocado. I'm saying be realistic. What's good for you? You know, Alhamdulillah, the basic principles are there. It's just about trying to incorporate slowly. You know, you're not going to go from eating none to eating 10. Exactly. So just add one if you can, if you're on none. I absolutely agree with the kids as well, because I've seen my younger boy, he attracted towards fruit more than my elder one, and it is because of the regular changes which we brought in. Right. So by the time he was born, we have more fruit intake in our diet plan. Great. You know my diet in Ramadan, I normally eat just chopped fruits and that's it in my Sahari and Iftari. And those kind of things I have seen that if it incorporates in kids, they are more influenced towards having fruits rather than having chocolates. Because I remember if I take him to any of the superstores and I said, okay, go and have anything, instead of going for chocolates, although he loved chocolates and he loved donuts, but he normally prefer picking strawberries. Or grapes. And I sometimes feel very proud. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Absolutely. You know, my little girl, she loves carrots. You know, that's her thing. Okay, fine, chop a carrot for you. It's not a problem. You know? Alhamdulillah. Okay, so in terms of your personal, because I know we just started Ramadan and just like that, we are already almost a week into almost in a week in Ramadan now. A few days and we will be in weekend, and next few days we will be almost halfway through Ramadan. And the time passes so quickly. So what are your plans for this Ramadan? Inshallah. Alhamdulillah, I've got a little bit of time off coming up. You know, we've got the Good Fridays and Mondays and bank holidays, and Easter's coming up as well. So that's all going to align nicely, alhamdulillah. So, alhamdulillah. As you said, the time's going to fly. We know that, and every year we get sad once after Eid. We get sad, rosé finished. You know? So like you say, you know, is making sure that, inshallah, if Allah gives us life, that we get through Ramadan, that we can say we tried our best, we made our most of it as much as we can. Because once it's gone, it's gone. It's gone, you know? So, subhanallah, shukr, alhamdulillah. Alhamdulillah. Acha, what are the positive messages you like to give us to our listeners? Because it's your show as much as mine. So it is our show. So what do you like to give messages? Mashallah. I must give brother Fahad the credit, man. Mashallah. 10 years on the health and fitness show, am I right? Alhamdulillah. Shukr, alhamdulillah. You've taken the show from strength to strength. And I think the lesson I've learned from you, brother, is you have to stick with it. You have to be consistent. Like Ramadan, you have to be consistent. Read a little bit Quran, but read every day a little bit, you know? So mashallah, what I've learned from you as my brother is you have to be consistent, you have to be committed, and mashallah, you are consistent, you're committed, and I've learned that from you. And that's why I'm out in the cold in Bury Park doing this. Jazakallah, bro. Mashallah. Jazakallah for all your efforts, mashallah. But what do you like to give message to our listeners? That's a message for me. Message to the listeners is, as I say, be committed and be consistent, inshallah, and look together. And definitely look after our health and well-being. That's the most important part. And enjoy our beautiful areas. Exactly. Let's make most of it. Okay. Thank you so much. Jazakallah so much. Jazakallah for jumping in and helping me out. Anytime. Inshallah. Assalamu alaikum. I hope this different version of Health and Fitness Show is something which you have enjoyed and liked. It is different. It is first time ever we have done Health and Fitness Show outside, especially in Bury Park, in a different kind of a weather. But hopefully you loved it, you like it. I do love to see your comments and your feedback on this show, and I'd like to see how much information you do understand and like. Dr. Tahir Mehmood, who have spoken to us about health and fitness and what we can and can't eat, where he ended up interacting with live public on the streets of Bury Park and speaking to them as what they like to have, especially in the month of Ramadan. I managed to interact with different shopkeepers and find out how they are spending their Ramadan. And definitely, finale wise, I have my brother Sulaiman Rafiq, who was here, and we were discussing about the healthy Ramadan. So I hope you like this version of Health and Fitness Show. Please give us your comments and feedback. We will be back again next week with another brand new show of Health and Fitness Show with myself and brother Sulaiman, inshallah. Remember us in your du'as. It's the month of du'as and prayers. Remember us in the du'as, and we will be back again next week. Assalamu alaikum.